हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ऑन डिमांड ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स ये वीडियो इंग्लिश में होने वाला है। मीन्स सम कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी, बट रेस्ट द जनरल थिंग्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल कवर इन इंग्लिश, बिकॉज it is their demand. That's right. Now let's start. So today it is our third session, right? And we will discuss between ScrollView and FlatList. What is the difference? This topic is highly important from interview point of view also. Each and every interviewer will ask this one. Generally, it is on top of the list when interviewer curates their list of interview topics for React Native developer. ScrollView we have already discussed, right? हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट सेशन में. When we are using ScrollView, if we have a limited list of contents, let us say only 5 contents we have to display. For an example, the categories of any e-commerce app. If we want to display that, then we will display, let us say horizontally or vertically. The screen can cover that one, right? Okay, let me show you an example. This is Flipkart application, right? We will create something like this. If you look at the top bar, we have different categories, right? Grocery, fashion, beauty, electronics. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Only 21 items. So the list is not that much large that we should use FlatList. Because why we are using FlatList? The important point, the important reason is the capability of virtualization. It has the capability of reusing the UIs again and again, right? For that reason we are using. So let us first discuss that one. The main reason, rendering. It only renders the items that are currently visible on the screen. If we take this example, now how many items are currently visible on the screen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 6 at bottom. So for this list, only 12 items are visible on the screen, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 items are out of screen. At a time, maximum 12 items we can see, right? But when we use a map or something to create our UI, all the UIs render at a time. So all 21 UIs are created in Android and iOS, wherever, whatever the platform you are using, will create on that platform, right? But let us consider that we have thousands of items or 10,000 items. Then it will create 10,000 UIs, and definitely that will be memory consuming, right? Now let us see the bottom ones. We have only 3 items at bottom, but if you scroll, there are more items. How many? Unlimited. Okay, but observe carefully. When I go to the last, it is saying hold on, loading more items, and will load some more items. Now you can see that so many items loaded till now, maybe 100 or 200, but at a time in our screen only 8 items are visible, right? 6 items are fully visible, and last 2 items are partially visible. Okay, only 8 items are visible. So now how many items that FlatList will render? Will it render all the items? No. It will render, we have 8 items are visible on the screen, and on top of that we have 2 items, and on bottom we have 3 items, right? So
द नंबर ऑफ विजिबल आइटम्स ऑन स्क्रीन प्लस 1 फॉर टॉप 1 फॉर बॉटम, द बफर। ओके, थोड़ा बफर रखेगा, नहीं तो आपको जो यूआई है वो अच्छा नहीं दिखेगा, राइट। जो स्क्रॉल जब आप करते हो एट दैट टाइम इट विल नॉट लुक दैट मच एफिशिएंट, इसलिए थोड़ा वो बफर रखता है ऊपर और नीचे। ओके, अगर हम ऐसा समझे कि सपोज हमारे स्क्रीन में 3 आइटम दिख रहा है, तो वो कितना रेंडर करेगा? 5 रेंडर करेगा। ओके, अगर 5 दिख रहा है तो 7 रेंडर करेगा, 7 आइटम्स इट विल रेंडर। देन हाउ इट इज वर्किंग व्हेन वी आर स्क्रॉलिंग? इट रीयूजेस द टॉप एंड बॉटम यूआई। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर ये पूरा एक रो को हम एक मान के चलते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमारा 3 कॉलम दिख रहा है, राइट। 3 कॉलम में कंटेंट भरे पड़े हैं। जैसे आप समझो कि दीज आर कंटेनर्स, टोकरी है, ठीक है। एक फूल वाले के पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ऐसे मान के चलिए आप किसी मंदिर में गए हो, वहाँ पर आपको वो थाली में फूल दे रहा है, ठीक है। तो जो मंदिर जाके आ गया वो वापस करेगा फूल, वो थाली वापस करेगा, लेकिन फूल यूज हो गया, ठीक है। तो क्या करेगा, वो थाली फिर वो दे देगा कि फिर से इसमें पैक करके दो, ठीक है। या तो आप ऐसे कोई फैक्ट्री का एग्जांपल लो जिसमें कंटेनर सारे हैं और कोई उससे निकाल रहा है आइटम्स, तो जो यूजेबल नहीं है उसको फिर वापस दे दिया जा रहा है लाइन में कि आप फिर से इसको भर के दो, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी जो 3 हैं कंटेनर्स, these 3 containers have now data in it, but when we are scrolling up, look, the first container now has a boot and this earbuds, right. I scrolled up, scrolled up, scrolled up. Okay, now that container is not visible, so it is unusable now, right. So what it will do, it will empty that container, okay, and put that the data in the last one. So हमें ऐसा फील हो रहा है, okay, we are assuming that we are seeing a new container each time, but container is only 5 in this case, but we are seeing the new data in those containers. Okay, that's why ये एक illusion create करता है कि हमें नया नया कंटेनर दिख रहा है। okay, but अगर हम स्क्रॉल भी यूज करते विथ मैप तो क्या होता, सारे कंटेनर यूज करता, उतना कंटेनर बनाता, उतना यूआई बनाता, ठीक है। तो आप ऐसे मान के चलो कि आप जिस शॉप में हो, मान लीजिए आप डेली आप 1000 लोगों को फूल बेच रहे हो, तो आपको 1000 डिफरेंट कंटेनर चाहिए होगा, ठीक है। जैसे आप पॉलीथीन की बात ले लो, तो उसमें क्या होता है, पॉलीथीन में भर के लोगों को दे देते हो तो वो लेके चला गया वो। आप अगर 1000 डिफरेंट पैकेट बेचते हो तो 1000 कंटेनर आपको देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम जो टोकरी की बात करते हैं, जो मंदिर जाने के बाद जब रिटर्न आता है तो हमें वापस कर देता है, तो 4 या 5 टोकरी में उसका काम हो गया, राइट। तो इसी तरह से वी आर ऑप्टिमाइजिंग आवर मेमोरी। ओके, ये प्लस पॉइंट क्या हो गया कि सिर्फ आपके 5 टोकरी में आपके काम हो गया, सिर्फ 5 कंटेनर में आपका काम हो गया। आप चाहे पूरा ट्रक भर के फूल भी उसमें बेच सकते हो लोगों को, ठीक है। ये आपके कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप पॉलीथीन में दोगे तो जितने कस्टमर उतने पॉलीथीन, ठीक है। So that's why FlatList is much more efficient as compared to our ScrollView. Okay? क्यों? इसको याद रखिए, इट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। फर्स्ट आपको यही पॉइंट बताना है। नंबर 1, it only renders item that are currently visible on the screen with some buffer for smooth scrolling. Okay? This is called virtualization. But in case of ScrollView, it renders all its children components at once. Until it renders all the components, you will not see the output because UI create नहीं होगा तो आप देखोगे कैसे, right? So up to that time, it may show us a white screen, or if we have any loader, then it will show that loader. So it impacts the user experience as well, right? In case of FlatList, immediately we saw the containers, we saw the items, and then when we scroll down, it is pulling new items and displaying it, right? But in case of ScrollView, it will fetch all the items, create all the UIs, then will display us. Okay, so user experience will also affect, performance will also affect. Suppose हमारे पास 1000 आइटम है, we have 1000 items, then ये 1000 different
आइटम्स रेंडर करेगा तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट। मेमोरी उतना हमें चाहिए 1000 आइटम्स के लिए। ओके, नाउ यूज केस तो हमने बहुत सारे रियल वर्ल्ड के भी डिस्कशन कर लिए, बट द मेन use case is here. If we take the example of e-commerce app, then for categories we can use ScrollView, that's fine. But for list of items we should use FlatList, because we never know how much items we will fetch from the backend. Okay, we are not sure about that, maybe 100, maybe 1000, it depends. That's why we will use FlatList. Till now we are practicing everything in Expo Snack, but today we will install that in our computer. So let us go to the official documentation, click on get started. Now you can read it. React Native allows developer who know React to create native apps. Native apps means Android, iOS and desktop specific apps, not a app which will run on web and you will make it responsive so that it will look good as well on mobile. Okay, those has limitations to use the native resources like location, GPS. Mobile devices has GPS that web browser don't have, right? So someone can manipulate. So those specific native things you can use. That's why it is called native app. At the same time, native developers can use React Native to gain parity between native platforms by writing common features at once. We have already discussed this in our first session as well कि हम एक बार कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, देन हम उसको यूज करते हैं एंड्रॉयड, iOS एंड डेस्कटॉप, ऑल थ्री प्लेटफॉर्म पे. We believe that the best way to experience React Native is through a framework, a toolbox with all the necessary APIs to let you build production ready apps. For a beginner, when you are starting something, it is best to use a framework. React Native itself a JavaScript framework, and we are using another framework for React Native to make it further easier. You can also use React Native without a framework, and you have to use after a certain period. However, we have found that most developers benefit from using a React Native framework like Expo. Expo provides features like file-based routing, high-quality universal libraries, and the ability to write plugins that modify native code without having to manage native files. Okay, but still there is a limitation. But if we consider this e-commerce app, then everything you can do using Expo itself. Okay, now let's first create an Expo app. Later on we will see that how to use something without Expo. Let's use this command, npx create Expo app @latest. Let me copy this, go to my terminal, npx create Expo app @latest and press enter. Now it will ask that create Expo app has not been installed. Do you want to install it? So click on yes. It will install create Expo app if it has not already been installed. Then it will ask me what is your app name. We have to give a name to your app, right? And the name whatever you are giving is your folder name also. This one, let us name it e-commerce app, and let us name it TechCraft Ecom. Okay, then it is downloading project files. So a specific template it is using to create many things which are ready-made. You don't have to worry about the setup and all those clumsy processes. It will do everything under the hood and will give you a ready-made empty project which you can edit and change it as per your requirements. Okay, now after that it is doing npm install. So
npm, if you know, npm means node package manager, because under the hood in JavaScript, if we are running on a laptop or if we are writing any backend code, then we are using node under the hood, right? So the packages that we are using for this is managed by node package manager. You definitely know about this. If you have come up to this point, means you know about that. If you don't know, then please go and read a little bit about npm. Okay, now our project is ready, but what we have to do, cd, then the folder name or the project name whatever we gave, then npm run Android, iOS और web. ओके, जो भी प्लेटफॉर्म में हमें रन करना है हमें वही कमांड देना है. तो पहले करते हैं cd TechCraft Ecom. अब हमारे फोल्डर के अंदर हम है, देन कोड डॉट, ओके ये मेरा काम नहीं कर रहा है कोड डॉट, ठीक है कोई बात नहीं. तो भी विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करते हैं और फिर वी विल स्टार्ट. ओके, तो प्रोजेक्ट मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर दिया. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट. So here, let us see first this package.json. In this package.json, we have our project name. Okay, सबसे ऊपर TechCraft e-commerce. Then main, we will discuss about this later. Then version number 1.0.0. वर्जन हम कैसे करते हैं सिमेंटिक वे में. पहला होता है हमारा मेजर वर्जन, देन माइनर वर्जन, देन पैच वर्जन. ओके, डिटेल इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे. देन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिपेंडेंसी. ओके, दिस मच ऑफ डिपेंडेंसी इट हैज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड. उसमें से एक्सपो वेक्टर आइकन्स, रिएक्ट नेविगेशन, एंड एक्सपो फॉन्ट, एक्सपो इमेज, एक्सपो लिंकिंग, एक्सपो राउटर, एक्सपो वेब ब्राउजर. ओके, so many things it installed automatically, React Native Web View. So the basic things whatever required. Okay, we no need to worry about most of the packages, but still some package you may need like Axios to make API calls. Okay, those we will discuss at that time. Package.json gives you an idea about all the packages those are installed plus certain scripts to run your project. Okay, इसमें से ये दो तीन हमें उसने कमांड प्रॉम्प्ट में भी दिखाया था, राइट? npm run Android to run it on Android, npm run iOS to run it on iOS, npm run web to run it on web. But here there are certain other things like npm run start. Okay, and we can create our own script as well. That also we will see how to create. Then this app.json, it is also an important file which has different configurations for our app. But you can see here in our expo, Android and iOS, those folders don't exist. Okay, they exist in bare React Native app. Now you go to this app folder. Within app we have tabs, and within tabs we have index.tsx. It is our main file that we will edit at the beginning. Now how to run this? Go to our command prompt, then npm run start. Okay. You can see here a QR code. Now open your Expo Go app in your mobile. And scan this QR code. Project is incompatible with this version of Expo Go. So we have to update our Expo Go. Now let us update this. So I will open Play Store.
and search for Expo Go. Let us search for Expo Go. Okay, and update it. As I have not updated from a long time, now it is asking me to update it. Okay, it's got updated. Let's open it. And now scan the QR. Okay, it's opened our app. It will take some time. It is bundling first. So bundling means the JavaScript file that is bundling. Then as for Android, it will create the native UIs and load the content from JavaScript. Okay, so now our app is ready. Here, let us make some changes to this app. Okay, let me put these two side by side. Okay, now both are visible on the screen. Let me delete everything from here because we will write everything from scratch. So these are not and these are not anything special, but only JavaScript files, right? So let me create one function app which returns let us say an empty JSX and export default app. If I save it, then I can see the updated thing, and now the updated thing is empty in my home. If I go to explore, then still it has contents, but home is empty because I made it empty, right? So what we did, we created a JavaScript function which returns nothing, okay? And we exported that JavaScript function. That's it. Now let us import view and text from React Native. We know these are React Native components, right? And here we will export a view, and within view we'll export a text component, hello world, and let us give it a style margin top 50. Okay, now you can see hello world on the screen, right? Is it visible? Yes, it is visible. Okay, let me change the style of text as well. Okay, that's it, right? So we can create a function, then export it, and this function returns JSX. Okay, that JSX displays in our UI, right? This function can be a regular JavaScript function or it can be an arrow function. Arrow function we write in this way. Instead of function, we will write constant, then name, then equal, then the parameters, then arrow, and then curly brace. That's it. Rest everything is same. Okay, and it works fine, right? Let us change it a little bit. Okay, but what we are going to do now, we will fetch a list of data and display it. So to fetch a list of data,
we will use this e-commerce dummy backend, and this is Swagger UI, where you can see the details how the API call will be made, what are the parameters, what we have to pass, all those things. For now, we will use these products, and after learning about authentication and login, those things, we will use this secured. So let us use this one, products. So click on try it out to verify how it works, and then click on execute. This is our API call. Which gives us 100 total, total data is 100, but it gives 10 data for our first page. Okay, now this one we will use, and for that we need XCS or fetch, anything we can use. You can change it later. Okay, so for now let us use fetch, and this API call we will make on the click of a button. So let us use a pressable. I have not installed Prettier. This is very bad practice. You should. Okay, but this is a new app completely, so I have not used that, and even in my VS Code, Prettier is not there. Let us look at the package.json, and yes, they are not using Prettier. Okay, that's fine. We will see later how to do that. So here we will create a button. Pressable, fetch data, on press, fetch data. Now we will create this fetch data function. So fetch data, now let us see whether this button is clickable or not. So console.log fetching data. Now click here and look at our console. Yes, we can see this fetching data. If we click here, right, so means button is working fine. Now here we will use fetch. This is our API, right? And we need await, and for this function should be asynchronous function. And once we got the data, we will convert that to JSON. Okay, remember this thing is not required in XCS, but in fetch we need that. Okay, so एक बार डाटा रिसीव हो गया तो वो हमें जो रेस्पॉन्स मिलता है, again we have to convert it to JSON, then we will get our data. Here console.log JSON. Let us see whether we are getting the data or not. So click on fetch data. Still we are not getting our data. We get in this format HIJK. Why? Because this response.json, it also returns a promise. So we have to wait till this promise either resolve or reject. Okay. Now let us verify again. Now we are getting the data, right? So while creating your app, you have to debug it step by step. Okay, instead of writing the whole code at once. ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है. आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आप ऐसे करते हो तो
आप फिगर आउट कर पाओगे कि कहाँ पर आपका इश्यू हुआ, कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, और वहीं पे आप रिजल्व कर लो। ठीक है, नहीं तो आपने पूरा कोड लिख लिया और फिर पता चला कि ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो मैंने तो सब कुछ लिख लिया, तो ये क्यों नहीं दिख रहा है, वो फिर वो कन्फ्यूजन होगा, दिमाग फट जाएगा 5-10 मिनट में, और आप छोड़ दोगे पूरा, फिर बोलोगे नहीं नहीं, ये आईटी ही बेकार है। राइट, एक दो प्रोग्राम तो अलग चीज़ है, फिर आईटी ही आपको बेकार लगने लगेगा। तो you debug it step by step when you are writing the program. Okay, now we got our data, but how to display on screen? We know that if we want to update the screen, then we have to update our state. ठीक है, ये याद रखिए हमेशा, state re-render होने पर आपका UI अपडेट होता है, राइट? We have already discussed that in our first session itself. तो अगर आपको ये आइटम्स डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे, तो आपको आपका स्टेट अपडेट करना पड़ेगा। स्टेट तो हमारे पास है ही नहीं अभी तक, तो लेट्स क्रिएट आवर स्टेट। लेट अस से प्रोडक्ट्स, राइट, एंड सेट प्रोडक्ट्स इक्वल यूज स्टेट, क्योंकि हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट से, राइट, एंड एट द बिगिनिंग द डाटा इज एम्प्टी। नाउ हियर we can check in this Swagger UI. We are getting data here, right? So response dot data. So here we will update JSON dot data. Okay, but this data can be undefined, right? So you have to handle it. ये हमेशा याद रखिए, अगर आप ये अनडिफाइंड नल ये सब प्रॉपरली हैंडल नहीं करते हैं, तो ये एक बेड प्रैक्टिस है लिखने का प्रोग्राम। ओके, तो आपको प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा। हाउ विल हैंडल? यूजिंग दिस nullifying character. Now if it is undefined or null, then we will update with empty. Okay, got it? Otherwise अगर ये undefined नहीं है, ये मान लीजिए एक एरे है और हमारे पास पहले से कुछ डाटा है, जैसे आप ये अगर देखो जो हमने देखा था फ्लिपकार्ट में, पहले से जो डाटा है स्क्रीन में वो भी रहता है, प्लस वी आर एडिंग न्यू डाटा टू इट, राइट? तो वो हम कैसे करेंगे? इफ वी वांट टू डू दैट, देन वी विल गेट आवर प्रीवियस डाटा। ओके, जो सेट हमारा जो स्टेट अपडेट करने का जो फंक्शन है सेट प्रोडक्ट्स, इसमें हम डायरेक्टली या तो वैल्यू पास कर सकते हैं या कॉल बैक फंक्शन पास कर सकते हैं। ओके, इधर वी कैन पास ए वैल्यू और ए कॉल बैक फंक्शन। पहले हम क्या कर रहे थे कि सिर्फ वैल्यू पास किए थे, बट अब हम क्या कर रहे हैं कि कॉल बैक पास कर रहे हैं। हम प्रीवियस वैल्यू गेट करेंगे, देन वी विल अपडेट दैट। Here again we will verify that whether we have this data or not. Okay, and we will update it. So थोड़ा complicated हो रहा है। Okay, let's try to understand. तो एक काम करते हैं, तो थोड़ा आपके लिए सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए, ये क्या रिटर्न करेगा कि प्रीवियस डाटा एंड जो न्यू डाटा इसने रिसीव किया है json.data, right? But we know that this json.data can be undefined. So if it is undefined, then ये क्या रिटर्न करेगा? an empty array. Okay, ये हमारे शुरुआती क्लासेस हैं। When we will go for advanced sessions, we will see more advanced concepts how to handle all these things. Okay, either you can do in this way or you can do in this way. Data equal json.data और empty array, और यहाँ पर you just write down data. Okay, now let's see. So what I will do, we will console log here our products and see whether we are getting the products or not, and we'll remove the console log from here.
Okay, now let us go to our app and click on fetch data. And let me reload the app. Yes. Okay, now at the beginning it is empty, right? Let's click on fetch data. Okay, so at the beginning it was empty, then yes, okay, fetching data, then we got the data. Now the next important part, we will display it in our app, and to display this we will use FlatList this time, right? So FlatList, the main important prop we will pass is our data. So our data is products. Then next important thing, how it will display those things. So that we will pass as a render item. In render item, we will get item by default. Okay, in this callback function, FlatList itself penetrates the items. Okay, मैप में हम क्या करते थे, सपोज हमारे पास 10 आइटम है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ वी हैव 10 आइटम्स, लेट अस से 1 2 3 4, 4 आइटम मान के चलिए, ठीक है. लेट x इक्वल 4, हमारे पास 4 आइटम्स है. तो हम क्या करते थे, जब हम x डॉट मैप करते हैं, इट विल इटरेट थ्रू ईच आइटम. सपोज i, तो हमें i में क्या मिलेगा, पहले इटरेशन में 1 मिलेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, राइट. तो यहां पर ये जो कॉल बैक है हमारे पास मैप के अंदर, ये कॉल बैक में ये i हमें ऑटोमेटिक मिलता है, राइट. इसमें वैल्यू ऑटोमेटिक पेनिट्रेट होता है, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग. सिमिलरली ये जो फ्लैट लिस्ट है, ये अंडर द हुड ऑटोमेटिकली ये मैप करता है, एंड इट विल पेनिट्रेट द वैल्यू टू दिस वन. ओके, ये कंफ्यूज मत हो जाएगा कि ये कहां से आया. ओके, जैसे मैप में ऑटोमेटिक वो आता है, जैसे यहां पर भी ऑटोमेटिक आ रहा है. ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा JSX फॉर द आइटम, ये जो JSX हम बना रहे हैं, दिस वन वी आर क्रिएटिंग स्पेसिफिक फॉर आइटम. तो एट द बिगिनिंग हम क्या करते हैं कि सिर्फ टाइटल डिस्प्ले करते हैं. So let us go to our Swagger UI. We will get item in this way, right? This is object for a single item. So let us display item dot name. सिर्फ name डिस्प्ले करते हैं. Okay. Again, I am handling the null or undefined with an empty. So if name is not there, then it will display empty item. Okay. Now use state has an error. Why? It is imported from React. Okay, and use state. Okay, that's fine. Must be used as descendant of. Okay, let me reload the app. Okay, so यहाँ पर actually what I have done, this import, this flat list automatically imported from React Native gesture handler, but this one we want to import from React Native itself. Okay, so let us remove this. Now click on fetch data. Then it is displaying all our 10 items, right? Soft soap, milk, yogurt, and if you compare from here also you will get that same things. Okay, now
what we will do for better readability, we will remove this code from here and put it in a separate callback function. So let us write a function here, render item equal, and rest everything will be same. These red lines you are seeing because we are writing in TypeScript file but not maintaining TypeScript file. आपको ये अभी समझना जरूरी है कि शुरू से अगर हम TypeScript में लिखेंगे देन इट विल बी कॉम्प्लेक्स। तो जावास्क्रिप्ट हम लिखेंगे, सब कुछ समझेंगे अच्छे से, TypeScript आप बाद में इंप्लीमेंट कर सकते हो, दैट इज नॉट ए बिग डील। ओके, नाउ वी आर गेटिंग द सेम आउटपुट, देयर इज नो इश्यू, राइट? बट हियर वी नीड इमेज एज वेल। हमें सिर्फ टाइटल नहीं डिस्प्ले कराना है, उसकी जो थंबनेल है वो भी डिस्प्ले कराना है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक व्यू हमने डाल दिया, व्यू के बीच में ये टेक्स्ट रहेगा एंड ऑन द टॉप ऑफ टेक्स्ट वी विल यूज इमेज and that image we will import from React Native itself. So let us use image. इमेज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉप हमारा क्या होता है? सोर्स। और इन दिस सोर्स वी विल पास दिस URI जो हमको यहां से मिल रहा है, इमेज URL। तो आइटम डॉट इमेज URL। ओके, अब इसमें वी हैव टू गिव विड्थ हाइट, अदरवाइज ये हमारा इमेज दिखेगा नहीं। In React Native, width and height is compulsory for image. So width, let us say 200 for now, and height 200. Okay, and save it. So click on fetch data. Image does not exist. What happened? Put here, right? Okay, so now you can see the images and the text below it. Got it? Let us make it 100 height. ओके, स्टाइलिंग आप बाद में कर लेना, इसको फुल विड्थ टाइटल का स्टाइल ये सब आप बाद में कर लेना, दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग नाउ। वी जस्ट गो टू द सिंपल थिंग बिकॉज वी वांट टू फोकस मोर ऑन आवर फ्लैट लिस्ट। ओके, तो हमने क्या कर लिया, फ्लैट लिस्ट में डाटा, रेंडर आइटम्स, और एक इम्पोर्टेंट हमारा प्रॉप है दैट इज की एक्सट्रैक्टर। इसमें हम आइटम्स लेंगे और आइटम डॉट ID, इसका जो ID है हमारा आइटम का, दिस विल बी आवर की। ओके, जैसे मैप में हमें की जरूरी है देना, वैसे फ्लैट लिस्ट में भी इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्पेसिफाई कीज, ताकि जब भी हम स्क्रॉल करते हैं ऊपर नीचे ये प्रॉपरली रेंडर हो सके। ओके, अब बात क्या आती है कि जब हम इसे स्क्रॉल करते हैं नीचे सबसे लास्ट को, तो ये फिर कॉल होना चाहिए डाटा, ये जो फेज डाटा, ये एक बार कॉल करके रख दिया ना, ऐसा नहीं, ये फिर से कॉल होना चाहिए। ठीक है, तो जब कंपोनेंट रेंडर हुआ पहली बार, जब फर्स्ट टाइम वी आर रेंडरिंग द कंपोनेंट, इट शुड फेच द फर्स्ट पेज ऑफ डाटा लाइक दिस। देन जब भी हमारा हम स्क्रॉल करेंगे नीचे तक, ये फिर लोड करेगा, कब तक? जब तक कि खत्म ना हो जाए डाटा। तो पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं, राइट? दिस इज आवर मॉक प्लेटफॉर्म, यहाँ पर हम टेस्ट कर सकते हैं पूरा API को, राइट? तो ये पेज नंबर हमें पता है कि टोटल 100 आइटम्स है, राइट? हम यहाँ से देख चुके हैं। तो लेट मी राइट पेज नंबर 2। अगर मैं पेज नंबर 2 लिखता हूँ यहाँ एंड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये 11 से शुरू होता है ID, राइट? फ्रॉम 11 अप टू 20 ये ID जा रहा है।
अगर मैं पेज नंबर शुरू करता हूँ 3 से, तो ये शुरू हो जाएगा 21 से। इफ आई चेंज दिस पेज नंबर टू 12, तो क्या होगा? 12 में तो कुछ है ही नहीं, राइट? तो ये डाटा हमारा एम्प्टी हो गया। तो एक बार डाटा एम्प्टी हो गया तो उसके बाद तो हमें डाटा नहीं मिलेगा। हमें पता है कितनी भी आप पेज नंबर बढ़ा लो, तो उसके बाद हम पेज नंबर नहीं बढ़ाएंगे। समझ में आ गया? अब सेम थिंग वी विल इम्प्लीमेंट हियर। तो उसके लिए चलिए अलग अलग स्टेट्स पहले डिक्लेयर करते हैं। एक है पेज के लिए, पेज एंड सेट पेज, राइट? सबसे पहले हमारा पेज होगा 1, राइट, एट द बिगिनिंग। देन उसको हम बढ़ाते जाएंगे। देन पेज के बाद इज एंड रीच्ड, ये चेक करेंगे क्या एंड रीच हो गया, और सबसे पहले ये फॉल्स होगा, राइट, कि एंड रीच नहीं हुआ है। जब एंड हो जाएगा तब हम इसको अपडेट करेंगे। ओके, सो पहले इसको अपडेट करते हैं। तो ये हमारा जो फेच डाटा है, यहाँ पर अगर हमें ये डाटा ये एम्प्टी मिलता है, इफ डाटा डॉट लेंथ इज इक्वल 0, ठीक है, ये जो लेंथ है डाटा का, ये अगर हमें 0 मिलता है तो हम क्या करेंगे, सेट एंड रीच्ड, ये ट्रू कर देंगे। अगर नहीं मिलता है तब हम प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे, ठीक है ना। अगर मिलता है तो अपडेट करने की क्या जरूरत है, तो ऐसे भी एम्प्टी है, खामोखा हम फिर अपडेट करेंगे, हमारा रेंडर हो जाएगा स्टेट अगर अपडेट हो जाएगा तो पूरा यूआई फिर रेंडर होगा, राइट। तो अननेसेसरली हम क्यों करें, उसको नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे टेम्पलेट लिटरल में, ओके। क्यों? क्योंकि ये पेज वी वांट टू मेक इट डायनामिक नाउ, तो डॉलर देन कर्ली ब्रेसेस एंड विद इन दैट हम ये पेज यूज करेंगे अब, ओके। तो अब क्या हो गया, ये पेज हमारा डायनामिक हो गया। अब यहाँ पर हम ये बटन हटा देंगे, वी डोंट वांट टू डू इट। उसके बदले हम क्या करेंगे, एक यूज इफेक्ट हुक लिखेंगे, और यहाँ वी विल इंपोर्ट यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट, एंड this will run each time our page changes, right? We will fetch data with updated page number we are taking from the state, right? So see, at the beginning we have already this 10 data without pressing fetch data, right, by default. But when we reach the end, it do nothing now. But what we want to change, to increase the page numbers. So here handle and reached will create a function like this, and what it will do, it will increase the page numbers. So if is and reached, if it is true, so we don't need to change the page numbers, right? But if it is not true, means we may have data, so we will change page number to previous page number plus 1, okay. So when we reach to the end of FlatList, we will increase the page number by 1, and once the page number increased, okay, as this dependency changed, so use effect will call the fetch data again, right? इस टाइप का यूज इफेक्ट हम कब करते हैं,
when use effect has a dependency array and there can be comma separated values, right? Here we have only one page. If you have more, then you can comma separated values, and this will trigger your fetch data again. Okay, now let us do that here. अब एंड रीच तो हमने हैंडल एंड रीच फंक्शन बना दिया, उसको कॉल भी करना होगा ना. So when we will call at the time we reach to the end of FlatList. So here there is a prop called on and reached. There we will call this function. Okay, लेकिन जब हम पूरे लास्ट पहुंचेंगे फिर हम कॉल करेंगे. एपीआई कॉल में फिर टाइम लगेगा, ये कब करेगा, फिर कॉल करेगा, अपडेट करेगा, हमें वेट करना पड़ेगा, राइट? तो हम क्या करेंगे कि अन एंड रीच्ड थ्रेशोल्ड यहाँ मेंशन कर देंगे कि 0.5. मोबाइल डिवाइस बहुत छोटा है, राइट? So when we reach to half of the screen, then it should make the next API call. That is our motto, right? So let's do that. It is showing some errors. Let us see what is that. Let me reload the app. Okay, and let us cross verify this call, API call. So page and size equal 10. Page is 1 by default, but when it's reached to the end, we'll increase that. Nice. Let's test it. So scroll down. See, I'm scrolling down. Now it made another API call, and there, as images are large, so it is not loading immediately, right? Similarly, scroll down. See, now I can unlimitedly scroll up to 100 items. ओके, अब मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि इसमें 10 ही आइटम था पहले, क्योंकि जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ वैसे ही आइटम फेच करके अपडेट कर देता है अंडर द हुड. तो यूजर को पता चला नहीं. दिस इज कॉल्ड इन्फिनिट स्क्रॉल लिस्ट. ओके, तो इसमें इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर. या तो इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि हाउ यू विल हैंडल इन्फिनाइट स्क्रॉल लिस्ट इन मोबाइल डेवलपमेंट, या तो वो ये पूछ सकते हैं हाउ यू विल हैंडल ए लार्ज लिस्ट ऑफ डाटा कंसिडरिंग परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, या तो वो पूछ सकते हैं हाउ यू विल हैंडल पेजिनेशन इन ए लार्ज लिस्ट ऑफ डाटा. ओके, कुछ भी पूछ सकते हैं इस टाइप का. सबका जवाब एक है कि when you reach the end you will make again API call with another chunk of data instead of fetching all the data at a time. Okay, you will handle in this way the paginations in FlatList. So let's scroll down, scroll down, scroll down. Now all data complete. So I am not able to go down anymore, and if I scroll up till I can up to the first data, right? So first data to last data, and once it fetched all the data, it will not fetch again. Got it? So this is all about FlatList, the difference between FlatList and ScrollView, and so many other things you can get in notes. And I will suggest you go through the React Native documentation itself for FlatList. React Native FlatList. There are so many other optimization techniques are there that you can see here. Okay, like okay, one sec. Extractor prop item
separator, list footer component. You can set a footer, a header, like one we saw in our Flipkart, right? It is saying hold on, data is facing. Those things you can do. Okay, so many other props are there, but the important things we discussed here, and how to handle performance optimization, that is here in the notes. You can look at that, and in case of any doubt you can ask me in the Telegram group. Okay, so let's end our session here. Thank you everyone. बाय बाय, हैव ए गुड नाइट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और अगर कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, तो टेलीग्राम का जो प्राइवेट ग्रुप है, जो लोग प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन किए हो उसमें आप पूछ सकते हो, जो पब्लिक ग्रुप में हो वो पब्लिक ग्रुप में पूछ सकते हो, या तो आप मुझे लिंक्डइन में आप मैसेज भी करो, आई विल ट्राई टू आंसर, बट मोस्टली ऑन वीकेंड्स। ओके, सैटरडे संडे, बाकी दिनों पे टाइम नहीं होता है। जो कंपनी का काम है उसमें ही पूरा दिन गुजर जाता है, फिर उसके बाद इतना मतलब दिमाग भारी हो जाता है कि कुछ और करने के लिए दिल ही नहीं रहता है। और जो आप मेरे इंस्टाग्राम में जो लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे जो भी पोस्ट वगैरह आप देख रहे हो वो कोई दूसरा हैंडल करता है, सो मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आप वो कभी भी देख रहे होंगे, लेकिन स्पेसिफिक मैसेजेस हो सकता है वो जेनरिक हो तो वो डायरेक्ट कर देंगे, नहीं तो मुझे करना पड़ता है। सो यू कैन एक्सपेक्ट इट ऑन सैटरडे एंड संडे, बट प्राइवेट वालों को वो हमेशा मिलता रहेगा, वो टीम प्रोवाइड कर देगा। थैंक यू, बाय बाय।